फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको संडे का दिन है और उम्म अल क्वीन में लेके जा रहे हैं ताकि आप एक दुबई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी एक और एक एमिरेट्स है, डिफरेंट एक जो एमिरेट्स है, सात एमिरेट्स में एक एमिरेट्स है। हाँ, इसकी एक रियासत है जिसको उर्दू में कह लें। तो वहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं, आप इंजॉय करेंगे। एक डिफरेंट कल्चर है वहाँ पे, एक विलेज टाइप माहौल है, सिटी से हट के है क्योंकि दुबई का जो एरिया है वो बड़े बड़े टावर्स और बिल्डिंग्स में ही है। लोग सिर्फ यही जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट विलेज टाइप जो कल्चर है वो भी दिखाएंगे आज। तो आप इंजॉय करेंगे आज हमारे साथ इंशाअल्लाह। तो आपने ये वीडियो हमारी पूरी देखनी है एंड तक। जब आप देखें यानी 70 किलोमीटर जी फ्रेंड्स, उम्म अल क्वीन, ये है उम्म अल क्वीन और खूबसूरत मंजर है उम्म अल क्वीन का। और हम तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ओपन आपको इंटरसिटी जो दुबई है ना वहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे सारे चीज़ आपको मिलेंगे। एक खूबसूरत ओपन माहौल है और साइलेंट है। मज़े की बात यह है कि ये बड़ा साइलेंट है और साइलेंट होने के साथ साथ खूबसूरत है। बंदे यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं तो मज़ा आता है। हम आपको लेके चलेंगे। अभी फ़िश मार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे ताज़ा फ़िश जो है ना वो मिलती है और रंग बिरंगी फ़िशें हैं, वो आपको दिखाएंगे इधर। फ्रेंड्स, ये देखें देसी मुर्गियाँ, बड़ी स्मेल आ रही है बाहर। ये देखें जी कबूतर, ये भी आपको चाहिए तो आपको बना के देंगे डिफरेंट कैटेगरी के। वाओ, वेरी नाइस फ्रेंड्स। ये देखें जी, बड़े बड़े प्यारे प्यारे परिंदे हैं, एंजॉय करें इनके साथ। ये देखिए, ये रंग बिरंगे पता नहीं क्या खा रहे हैं।
ये जी चिंगा मच्छी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े चिंगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब आपका? आप किधर से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश में कहाँ से हैं? शिलट। और शिलट के बहुत आदमी है इधर हैं। क्या बात है यार। फिश मार्केट है जी ये उम्म अल क्वीन में। ये देखें बड़े बड़े झींगे और अजीब अजीब कलर की मछलियां हैं। मुझे जरा मछली पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपकी खातिर मैं इसकी स्मेल जो है ना बना रहा हूँ। भाई साहब किधर के आप? जो है ना ये वाला इसका क्या है? 20 रुपए किलो। और ये वाला केकड़ा 15। और ये वाला शेरी नहीं गल्फा इसका क्या रेट है? 15। और ये भी 10। और वो वाला लारी इसका क्या रेट है? 10 है। सबसे महंगा वाला कौन सा है? ये बस 10-15 वाला सारा। Where you from? Ghana. And how many years you are here? 1 year. Speak loudly, so huh? And what you are doing here in Dubai? I'm working at Sanaya. Umm Al Quwain New Sanaya. What is your name? Isaac. Isaac. You from Ghana? Very good. How is Umm Al Quwain? How is the weather of Umm Al Quwain and here atmosphere, the people? How is here? Everything is cool. I'm just enjoying this Arab, so I don't know much about it. And people want to learn, want to listen what you are saying. Can you explain in front of camera how is the Umm Al Quwain? How is Umm Al Quwain? Oh, it's fine, it's fine. Yeah, I'm not You like it? You like it? Huh? You like it? Yeah, so You like the Umm Al Quwain? it's okay. It's Okay. okay. And now your country people also watching you. What you give the message to them? I'll tell my people. Yeah. I'm here, but I'm not enjoying what I want. You miss your family, Yeah, right? I miss my Yeah, family. right. Yeah, That I is miss that is my the main thing. hometown because All people My- here miss their family, be here away from is them. not what I was expecting. No issue, no But issue. Everything will be fine. No issue. Slowly you will be. Yeah, you will be adjust here. You will be stable yourself, and inshallah you will make a good business in future here. You have good hopes, huh? You think good, inshallah have good. Good. future. Okay. Okay, my friend. All the best. Okay. Okay, just give a good message to your friends. Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I